Dear friends, welcome to SHQ Radioactive. I'm Sayyid Humayun Qaisar. From some weeks now, we are into a series, How to Face an Interview or Facing an Interview. We're coming up with another episode of the same today, and we'll be talking for around 20-25 minutes, and then move on to another episode of Facing an Interview. We'll be covering it in 5-6 episodes, or maybe 7, and today we are in the third episode. Before we proceed in the third episode, let's recollect, have a brief look at the points we discussed during last 2 episodes. Well, that was what we had discussed in last 2 episodes. Coming now to the third one. We finished the last episode by saying that be confident, talk to them, try to be comfortable in whatever situation you are, and move ahead. You can talk to them a bit freely, rather freely, but not casually at all. But here, we begin with something else also. Don't be too familiar, because you cannot get too familiar in a professional interview. The interview is a professional meeting. You talk business. Business doesn't mean that I'm talking of business in that sense. And if you are there for an interview for admission, you talk that. If you are in a competitive exam to get into administrative services, you talk that. Or if you are into, say, management or sale or whatever it is, that's what that business there you are present there to talk about. This is not a place for making new friends. Maybe once you get into an organization, somebody is there and you become friends, that's something else. But this is not a place to make new friends. So do not overstep your place as a candidate looking for a job or a placement. Don't overstep it. So if you have to convey something, let it be within those boundaries and parameters which the table between you and the other side defines. And you are wise enough to know that. What I'm saying. The other part is, which is very important, is use appropriate language. It doesn't mean you will be using foul language. You will be using unparliamentary, unconstitutional language. You will be using language, of quite refined language. But what I am saying is, it's given that every profession has its own terminology. Every profession demands a kind of presentation and a kind of language. That's what I'm saying, that use appropriate language. It's given that you will use professional language during the interview. Be aware of any inappropriate slang words. Mind it. What I'm saying, mind it and mind it. Don't use slang words. References to age, a race, a religion, politics, gender, or sexual orientations. Do not use any of these words, references, sentences, unless and until demanded that you speak on that subject. Even when you are speaking on, say, subject of race, on subject of gender, you have to use the right and appropriate language. If you indulge into talking about race, religion, politics of a different kind, age differences, sexual orientations, and slang, and in a way that you are dismissive and you are curt, these topics could lead you to door very fast. These words could send you out of the door very quickly. No organization tolerates such behavior. So it's better to stick to the given formula with your own connotations and presentation. झटकों में, इसमें, उसमें, monosyllables में, references में आधे छोड़ के आधे करके बोलना नहीं है. That's not done. Here,
Attitude plays a key role. We have been talking of attitude from episode 1. Attitude plays key role in success in an interview. There is a fine balance between confidence, professionalism, modesty, and you can yourself manage that balance and understand the balance. Even if you are putting up an act, a performance to demonstrate your abilities, know how far you can go in putting up an act, because normally those acts get punctured right in the interview. So if you are putting in an act, you are good at it. You limit it. Don't take it too far. Overconfidence is bad, if not worse, as being too reserved. Well, they ask you a question, and then in nutshell you answer and stop talking. Shortest possible way. You say something and that's all. No, that's not done. You can't be reserved. You have to open out. And believe me, they need not push you to open out. If you are not opening out, they are not bothered. If you are very, very, very lucky enough, someone might again ask you और prod you और push you, नहीं ना बताएं ना बताएं, आपको जानते होंगे, शायद आप और कहना चाहते हैं. Normally they won't do it because they think you do not know. Maybe you are knowing it, but you are trying to be reserved or you are reserved. One thing I said earlier, don't get too familiar. Then two, don't be overconfident. But another thing that's equally important is not being very reserved. This is a place to demonstrate your abilities and capabilities. So reservation will not lead you anywhere. That's what I'm saying. Carry an attitude of confidence of your ability, but don't throw attitude at them. They have seen a lot of it and they know a lot of it. And once you are talking to them, you have said something. It does happen to people. You have said something. While answering the next question, you end up criticizing your first answer. Don't do it. This is not done. That means your first answer was incorrect, wrong, inappropriate, and you are yourself dismissing it. So you won't be doing that. Don't do it. वो मैंने कहा था ना, मगर मुझे लगता है उधर वो गलत हो गया था, वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, या उसमें ये कहना था तो मैंने वो बोल दिया, अब आप सुनिए, अब मैं बताऊंगा. तो उसका मतलब है आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, सही वक्त पे सही बात आप नहीं कह पाते हैं, और जो मौका होता है मिस करके बाद में आपको चीज़ें याद आती हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में अच्छी बात नहीं मानी जाती है और जो आपके खिलाफ जा सकती है, आपके अगेंस्ट जा सकती है. इसीलिए ये बात नहीं करनी होती है कि आपने कोई बात कही और थोड़ी देर बाद आपने उसी बात को क्रिटिसाइज किया या फिर अपने आप को क्रिटिसाइज किया. दूसरा तरीका है, नहीं मैं हर वक्त ऐसे मजबूरी में ही रहा, मैं हर वक्त ऐसा था तो मुझसे गलतियां होती रही, फिर मैंने तो कोशिश की लेकिन वो ऐसे निकले, फिर उसने ऐसा किया. ये वो फोरम नहीं है. यहाँ वो चीज़ें ना एक्सेप्ट की जाएंगी, ना उनको सुनने की ज़रूरत है, ना उनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में आपकी. तो बेहतर है ये चीज़ें अवॉइड की जाए. Well, the points we discussed just now, you're seeing them on the screen or you have seen them on the screen. Well, they are there for 7 seconds, but you can again and again watch them, pause them and see. Take care to answer the questions. When I'm saying take care to answer the questions, what care should you be taking while answering a question? First is listen to the question. We discussed it in the first episode or second episode. Listen to the question. Don't hear it, listen to it. What's being said, you are not supposed to remember that, but you should take it in, absorb it so that you can reflect back and answer the question. And don't hurry to answer the question. Take your time. They are there to listen to you and you are there to deliver. Take your time. Don't hurry, because there are no marks for answering quickly and immediately, but there is a lot of benefit in answering rightly. When interviewer asked for an example of time when you did something, well, you said, I passed this exam in that year, I was part of that society in this year, I played cricket that year,
I kicked a football then. I was part of a drama then. They're asking you behavioral questions. And here, you have to be specific in answering them. These questions are designed to elicit a sample of your past behavior. Remember that. These questions are not useless. When you come out and you say, उनने क्या पूछा, उन्होंने कहा तुमने उस साल क्या किया, इस साल किया और क्या ताल्लुक है इसका सब्जेक्ट से मेरे? नहीं ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो इसीलिए जब आपसे वो पूछा जाए तो आपको याद हो कि 2018 में मैंने ये किया था, 2002 में मैं स्कूल में था, ये हुआ था, फिर मेरे साथ वो हुआ। ये आप उसको रिलेट कर सकें। ये ना हो अब मुझे याद नहीं है, ऐसा हुआ था लेकिन मुझे नहीं, हाँ मगर उसमें ऐसा भी था, फिर वो भी हो गया था, हो सकता है। दिस इज नॉट द वे टू आंसर दीज क्वेश्चंस। दीज आर क्वेश्चंस, योर पर्सनल क्वेश्चंस, बिहेवियर क्वेश्चंस। यू आर सपोज टू नो देम। They are supposed to be somewhere in your subconscious and come out at the exact time, with the exact date, location, time, and things that happen around you. So that's what I'm saying. These are not useless questions. If you fail to relate to a certain example, you not only don't answer the question, but you also miss an opportunity to prove your ability and talk about your own skills. Well, I'm saying that when you said that I was part of a drama, I acted in that, but I don't remember who had written it. Possibly it was staged in 2011, maybe in 12 also, or I don't remember. Yes, it did certain things like that. That means these are your skills. This is something additional ability in you, which you are not able to translate into an answer. So when you go for an interview, remember your past, your dates, when you qualified, when you did certain things, so that you are able to recollect them there. These are asked in many, many behavioral interviews where they want to see your behavior as well. It's not always that you appear for a competitive exam. Most people appear for other interviews than competitive exams. So in other interviews, your behavior where you have to meet people, interact with them, and present a brand, then your behavior is judged and judged very seriously. Normally, what we say is that when you go for an interview, they'll ask you questions, naturally. But have you ever thought of asking questions as well? That you also ask a question. आपने भी सवाल पूछ लिया, इसमें क्या गलती है? आप भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप सवाल कैसे पूछेंगे? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कोई बात उन्होंने आपसे की और उसके बाद कहेंगे क्या आपको कुछ पूछना है? आप कहते नहीं नहीं मुझे नहीं पूछना है। आप सोचते हैं ये खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वो जज कर रहे हैं आपको। आप कहिए पूछना है मुझे, लेकिन पूछने की बात जो होगी वो पते की बात हो। आप बात कर सकते हैं जहां आपकी नौकरी लगने वाली है उसके किसी प्रोजेक्ट के बारे में, उनके किसी थीसिस के बारे में, उनके किसी पेपर के बारे में, उनके किसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसने पास्ट में कोई काम किया है, इधर से निकला है, उनके किसी इमेज के बारे में। और ये किस्सा सिर्फ कंपनी का नहीं है, ये मामला है उस में जहाँ गवर्नमेंट जॉब में भी आ रहे हैं। खुद आपसे सवाल पूछेंगे वगैरह वगैरह, तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैं ये इसके बाद ये होगा तो नॉर्मली इसके बाद क्या होता है, मैं इस जॉब में जाता हूँ वगैरह वगैरह। इसमें एक चीज़ होती है, इसमें आपकी दिलचस्पी कितनी है उस काम में जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दिखती है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स एन इंटरेस्ट यू हैव in the job you are seeking, the company you want to get into, the department you want to get into, the institution you want to get into. And then don't appear desperate. I said earlier also in an interview, no need to appear desperate. You should hire me on, please, you do it, because, and all those things, or present yourself in a way that you're desperate to get into, get this opportunity, get this job, get this place in a company. So, this speaks of lack of confidence, and this doesn't go well.
with the people on the other side. Here, remember three C's: cool, calm, and confident. You need to be cool, calm, and confident while being present there in front of a panel. Here, I would like to add one more thing also: is that when you are there are people who feel nervous before the interview. There are people who feel nervous while entering into a dialogue with others, while talking with others. Anxiety is natural part of any exam or interview. A bit of anxiety. If you don't have, maybe you don't work that hard as well. वो थोड़ा जो खौफ है थोड़ा सा वो ज़रूरी है इम्तिहान में, इंटरव्यू में, ऐसी चीज़ में, किसी भी नई चीज़ में। नई फिल्म रिलीज होती है तो खौफ होता है हम सबको। पहली बॉल खेलने जाते हो तो खौफ होता है। फुटबॉल का मैच सेमीफाइनल है, कोई मैच है, आप खेलने उतरे तो थोड़ा सा होता है दिल में। थोड़ा ठीक है, मगर इतना ही हो जिसको आप हैंडल कर सकें, पहली बात। दूसरी बात है इसके बारे में कि जब आप इंटरव्यू का मामला है तो आप कहीं मॉक इंटरव्यूज़ करिए अटेंड, कहीं उन लोगों से मिलिए जिनने इंटरव्यू अटेंड किए हैं। फिर ऐसा है कि आप किसी को कहिए जो आपके क्लोज हों, वो आप इस सब्जेक्ट पे वो जानते हो, मेरा इंटरव्यू लीजिए, लेकिन अपने साथ एक दो उन लोगों को बिठाइए जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वो भी पूछेंगे मुझसे बात। उससे ये हो जाता है कि गैर के सामने बात करना, जिसको आप जानते ही ना हो, उसकी चीज़ का जवाब देना, इसकी प्रैक्टिस हो जाती है और वो एक खौफ दूर हो जाता है। और इंटरव्यू की तैयारी से पहले और जब तैयारी कर रहे हैं और जाने से पहले ज़िंदगी में जितनी चीज़ों में आप कामयाब हुए हैं, अगर रिटन टेस्ट था उसमें कामयाब हुए हैं, अगर पहला राउंड था इंटरव्यू का उसमें कामयाब हुए हैं, अगर ग्रुप डिस्कशन था उसमें कामयाब हुए हैं, आपने इम्तिहान पास किए हैं उनमें कामयाब हुए, अपनी कामयाबी को याद करिए, अपनी सक्सेसेस को याद करिए और देखिए कि मैं इतना सक्सेसफुल रहा हूँ, यानी मुझ में कुछ है, मैं अपने आप पे भरोसा कर सकता हूँ। तो हो सकता है नर्वसनेस आपकी दूर हो जाए। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एपिसोड में कई मरतबा कहता हूँ, यू हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज दे नीड यू एंड बिकॉज यू आर कैपेबल। नोबडी इज डूइंग एनीवन अ फेवर। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, आप वहाँ मौजूद हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप में ये काबिलियत थी, आप उस जगह पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर यही है और नर्वसनेस खत्म करने का तरीका यही है कि इतने हज़ार लोग और हिस्सा ले रहे थे, लाख लोग थे, इतने लोगों ने कोशिश की, लेकिन मैं ही क्यों इस स्टेज तक पहुंचा, यानी मुझ में कुछ है, मैं इस स्टेज तक इसीलिए पहुंचा हूँ, कुछ तो होगा मुझ में। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप बेहतर बिहेव भी करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। हम बिहेवियरल क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि अगर वो पूछे जाए आपसे तो आपको कुछ पता होना चाहिए इनके बारे में। और एक और सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। You can practice this answer since most people ask this question. And what you have to keep in mind when they ask you, tell us something about yourself. You tell them something which is not part of your CV or resume. Yes, जो आपके रिज्यूमे और सीवी में नहीं है वो बोलना है, वो तो उन्हें देखा है, वो तो उन्हें स्टडी किया है, उनके सामने है, तो वो बोल के क्या करेंगे आप? आपको वो बोलना है जो उसमें नहीं है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सीवी। एंड इसमें बहुत चीजें हो सकती हैं आपकी जिंदगी में, इसलिए मैंने कहा आप यू कैन वेल प्रिपेयर एन आंसर इन एडवांस टू दिस क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और आप सोचेंगे उसमें ऐसी हो सकती है कि कुछ वैल्यूज की बात हो सकती है, कुछ पेरेंटल वैल्यूज की बात हो सकती है, उसमें उसमें वो चीजें हो सकती हैं कि जो इंटेंजिबल है, जो नजर नहीं आती हैं, जो कागज पे नहीं है, लेकिन आपके अंदर हैं और आप करते आए हैं। आप सोचें अपने बारे में कि आपने ऐसी चीजें काम किए होंगे, लोगों के साथ मिलके किए होंगे, जो कहीं किसी कागज पे लिखे नहीं जा सकते हैं, जिनके आपको नंबर नहीं मिल सकते, लेकिन आप रिकलेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस पीरियड में मैं वहां था, तो वहां से अलावा आया था, मैंने ये किया, उस पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे महसूस हुआ, हमारे पड़ोस में कुछ हुआ था तो मैंने किया, या मेरे फैमिली में हुआ था, या कहीं अर्थक्वेक आया था तो मैं रिलीफ पार्टी के साथ चला गया, या मैं हाइकिंग और माउंटेनियरिंग करता हूँ।
कुछ हॉबीज की तरफ आप जा सकते हैं, हॉबीज पूछी भी जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी जा सकते हैं आपकी। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड माइंड इट अगेन, आई एम सेइंग, when you tell them something about yourself, it need not be what is already in your resume, क्योंकि आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में भी बता सकते हैं थोड़ा बहुत, कि वो तो नहीं पता है लेकिन मैंने किस मुश्किल से कहाँ कहाँ क्या किया है लाइफ, दैट इज समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और ये अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा आपके लिए, ये बात अच्छी लगेगी उसको। एक और बात जो पूछी जाती है कि कहीं भी जा सकती है किसी भी इंटरव्यू में, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसमें आप किसी खेल की बात, किसी फिल्म की बात, किसी आर्ट की बात, किसी किस्म के कपड़ों की बात, किसी जगह की बात, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, वो पसंद है, ये पसंद है। लेकिन इससे हट के भी हो सकती है इसमें बात, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल है, आपको दूसरों की इज्जत का ख्याल है, आप अपनी सेल्फ स्टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, आप बैड मैनर्स पसंद नहीं करते, अच्छी नहीं लगती, अच्छी जबान बोलना चाहते हैं, और चाहता हूं कि दूसरे भी मेरे साथ अच्छी जबान में बात करें। आप चाहते हैं कर्टसी हो मुझ में, और कोशिश करता हूं कर्टियस रहने की, बाकी उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ कर्टियस रहेंगे। ये बहुत सी चीजें हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स लेके नहीं आ जाना आपको कि नहीं वो तो मुझे ऐसा तो बिल्कुल बुरा लगता है, मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं देता हूँ, ये आदमी तो मुझे बेहद ही गंदा लगता है, वो क्या बकवास उसने काम किया था, इसको खेलना ही नहीं आता है। नॉट दो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नो। They want to know your opinion about certain things indirectly, to come out with that, and they want to know your inner self also, how you project it. तो ये एक बुक आपको मिल रहा है। इसमें कुछ देर पहले मैंने कहा था कि हमने हॉबीज को टच किया था, कि आप थोड़ी हॉबीज इसमें ला सकते हैं ताकि हॉबीज के बारे में पूछा जाए, और अपनी हॉबीज बता सकते हैं आप, मैं क्या पसंद करता हूँ अपनी हॉबीज में। और ये हो सकता है कि फिर वो आगे थोड़ा उसको आगे बढ़ा दें कि ये हॉबी आपने कैसे आपने आई, तो इस हॉबी से आपने क्या सीखा। जरूरी नहीं हॉबी से कुछ सीखा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है, और ये कैसे परस्यू किया आपने, आपके साथ इसमें और कौन इन्वॉल्व है इस हॉबी में। और जब आप ये बात करें और जब आप कहें अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दोनों केस में सरमन्स नहीं देने, यू डोंट पास सरमन्स, नो, you say your point of view and what you feel like and what you are doing. That's what I'm saying. Then you near be, be specific. Not exactly you can need to be specific in your hobbies. I collect, say, stamps. कोई कहेगा मेरी हॉबी दोस्त बनाना मेरी हॉबी है, ये बड़ी आसान सी हॉबी है, फेसबुक और वो बाकी चीज़ों की वजह से। तो लेकिन ये हॉबी बेहतर है नहीं, कोई खास सेलेबल नहीं है ये हॉबी। मैं पेंट करता हूँ, ये हॉबी है। मैं पुरानी क्लासिकल फिल्में देखता हूँ, हॉबी है। मैं इस किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं ये बजाता हूँ, मैं इस सोशल वर्क ग्रुप के साथ काम करता हूँ। दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, आपकी हॉबी, आपके इंटरेस्ट और आपके टेस्ट्स, इससे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अच्छा है, आपको मौका दे रहे हैं, आप बताएं ये चीज़ें, इसमें क्या बात है, कोई मुश्किल नहीं है। वो एक और चीज़ है कि अगेन आई एम सेइंग, डोंट प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ना कोई कह सकता है, तो वो जजमेंटल होना ज़रूरी नहीं है। जब आप ये चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, जजमेंटल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आज का आखिरी पॉइंट मैं आपके पास लाऊंगा, और उसके बाद दो चार चीज़ें कहूँगा जो अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में जो बातें की आपको लगता होगा ये इतनी स्पेसिफिक नहीं है, मगर अगर आप इनके बारे में सोचेंगे रिपीटेडली, आपको पता लगेगा आपने कैसी कैसी सिचुएशन फेस की जब ये सवालात आपके सामने आए, और कैसी सिचुएशन आपकी हो जाएगी जब आएंगे अगर आप तैयार नहीं होंगे इन सवालात के लिए। Well, another question you'll be asked, and is often asked, what are your strengths and weaknesses? आप में क्या खास बात है, क्या आपकी ताकत है और क्या आपकी कमजोरी है? Well, the most shocking part here is most of us do not know. Just think about yourself.
You feel like something that it's my strength, and you feel like something it's my weakness. But are they really your strengths and weaknesses? ये जब बात आपसे होगी तो क्या जवाब देंगे आप इसको? अगर आप उस जगह जा रहे हैं जहां आपको लोगों से मिलना है, नौकरी में, जहां आपका पब्लिक कांटेक्ट है, आपका कहेंगे ओरल कम्युनिकेशन मेरी एक स्ट्रेंथ है, मैं बात कर सकता हूँ, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ और मैं बात सुन सकता हूँ। ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि मुझे पेशेंस है सुनने की, बात करने की और लोगों को कन्विंस करने की, क्योंकि आपका उस जॉब की पब्लिक डीलिंग है। और ये बात इसमें भी आ सकती है, अगर हम टीचिंग डिसिप्लिन की बात करें, उसके लिए इंटरव्यू आप दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझ में पेशेंस है लोगों के सवाल सुनने की, उनके जवाब देने की, और लगातार खुद पढ़ने की और तैयारी करने की, और मेरे पास एक एबिलिटी है बात समझाने की। आई हैव एन एबिलिटी टू मेक अ पॉइंट एंड also reply to reactions to my point. And I believe in certain kind of discipline within certain parameters, and I respect questions of others. ये बात होगी तो मैं कह रहा हूँ ये काम आ सकती है आपके। ऐसे जवाब दिया जाता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का। अगर आप खुद बोल रहे हैं और आपकी जो बोलचाल है, आपकी ज़बान ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, और आप कहते हैं मेरी जो ताकत है वो है लोगों से गुफ्तगू करना, तो दो चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं। पहले आप में एक काबिलियत हो कि आप ठीक तरह बात कर सकें, और वहाँ की मेरी स्ट्रेंथ है बात करना, क्योंकि मैं इस नौकरी में अगर आता हूँ, मैं पब्लिक सर्विस में आता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं कोई बेचने में आता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में आता हूँ, मैं टीचिंग में आता हूँ, मैं बात करने जानता हूँ, सुनना जानता हूँ, सवाल मैं प्लेजेंटली बिहेव करता हूँ। तो ये एक चीज़ होगी। और वो पूछेंगे आपको कैसे पता चला, ये टेस्ट कहाँ हुआ है आपका, तो आपके लाइफ में एग्जाम्पल होंगे, नहीं है तो एग्जाम्पल आपको गैदर करने हैं, सोच के रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स जो आप वहाँ बताएंगे उनको। ये मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, हर चीज़ में यही नहीं स्ट्रेंथ होती है, आपकी कुछ और स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कुछ और ताकत हो सकती है, कुव्वत हो सकती है, मैं वो नहीं कह रहा, वो बिल्कुल हो सकती है। और वीकनेस की बात है, जब आप वीकनेस अपनी डिस्क्राइब करें, वीकनेस को ऐसे डिस्क्राइब ना करें कि आप हेल्पलेस हैं, कि मैं तो चाहता हूं कि मैं सच बोलूं, लेकिन मुसीबत ये सब झूठ बोलते हैं, मैं कैसे सच बोलूंगा, तो मेरी कमजोरी है झूठ बोलना। या सब लोग रेकलेसली गाड़ी चलाते हैं, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो मैं भी वही करता हूँ जो वो करते हैं, क्योंकि अब जब क्या करें, जब कोई मानता ही नहीं है डिसिप्लिन, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ये मुझे अपनी कमजोरी दिखती है। यहाँ से आप अपनी तारीफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और वो कमजोरी बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये किस काम का आदमी है, गलत काम जिसका देखता है उसको फॉलो करता है। तो इसलिए अपनी वीकनेसेस में कर लें, स्वॉट एनालिसिस कर लें, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का अपने बारे में। आप ना कर सकते हो किसी को कहें कि मुझे ऑब्जर्व किया तूने 6 महीने से, साल से, 2 साल से, 5 साल से, अब एक एज अ aloof bystander moving out of my close relationship, stand away from me and look at me and see what are my weaknesses. Tell me. You can talk to your family members, your brothers, sisters, parents. You can talk to your relatives. You can talk to your teachers. You can talk to your mentors. You can talk to your close friends. वहां आपको पता चलेगा तो आप ऐसे ऐसे हैं। लेकिन वहां जब आप जाएंगे तो इसको हैंडल ऐसे करना है कि ये वीकनेस ऐसी ना लगे कि ये आपके खिलाफ चली जाए। कोई कहता है कि मेरा ऐसा है कि मैं टाइम लेता हूं काम करने में, लेकिन मैं काम एग्जैक्टली ठीक करता हूं और पूरा करता हूं। हो सकता है लोगों को बुरा लगता हो मैंने टाइम लिया, लेकिन मैंने काम करना है तो सही करना है, इसलिए टाइम लेता हूं। साइड से वीकनेस है, दूसरे स्ट्रेंथ भी है। लेकिन एक और बात है ये यहाँ, जो ये आपकी कमजोरियां आप कहेंगे कि वो कहेंगे इसमें ये चांस है कि ये मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, ये चांस है इंप्रूवमेंट का, देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। बट अगेन हियर, इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, if you are into a job which requires certain particular things, don't relate any weakness to that, because what they require a kind of a person for that job, and you end up saying things which are not matching the candidate they require, the person they require. यानी आप जा रहे हैं एक ऑनलाइन राइटर के काम पे जा रहे हैं, आप एडिटिंग के काम पे जा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स की आप लिखने के काम पे जा रहे हैं। काम मुझे पढ़ने का शौक नहीं, मैं तंग होता हूँ किताबें देख के, मैं किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ।
तो मैं इधर से उधर पढ़ लेता हूँ उनको, ये मेरी कमज़ोरी है। अरे वो आपको ले रहे हैं कि आपको कुछ पढ़ना है, वो एडिट करना है, आपको कुछ देखना है, तो आप ये चीज़ें कभी अपनी वीकनेस में न लाएं, जॉब का प्रीरिक्विजिट देख के अपनी वीकनेस को ना बनाएं। और एक और चीज़ भी ये है कि किसी भी इंटरव्यू में हाउ टू हैंडल digital platforms and digital technology should not be your weakness and don't relate it. असली बात है कि मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ ये नए ऐप्स और इसका इस्तेमाल। ऐप्स का मतलब गेम्स नहीं है, मैं इस चीज़ में काम नहीं करता हूँ और मैं वैसे प्रेफर नहीं करता हूँ लैपटॉप पे लिखना और बाकी चीज़ें, और ये नहीं करना है। आज हर एक में आपको ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ कहीं भी अपनी वीकनेस ना दिखाएं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Here we'll be ending today's episode. Next week, there will be certain questions we'll be posing to ourselves. Why should I hire or select you? Next week, where do you see yourself in 5 years? What's your ambition? Why this company or why this job only? Thank you very much for being with me on SHQ Radioactive and being part of this episode of Facing an Interview. All the best to you. If you have applied for any interview or any job, start preparing now. Believe in yourself and you'll succeed. But find a direction and work with dedication and direction. Don't go directionless. We work very hard, most of us, without any direction. The results are minimum. Why not work with a certain kind of a direction and achieve maximum results, which you deserve? Thank you.